आज आम डिस्कस करिया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अल्प बहुत समस्ते जानी ओडिया ताको घर्षण कहती। ठीक अच्छे फ्रिक्शन आगे फ्रिक्शन बुझ तापर आम फ्रिक्शन उपरको जीवा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन आम केमती बुझा मन कर एटा गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेसटा अच्छी राइट एटा गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेसटा अच्छी तापर मन कर गोटे बड़ ब्लॉकटे अच्छी बड़ ब्लॉकटे अच्छी मन कर 1000 केजी गोटे ब्लॉकटे अच्छी पथरटे 1000 केजी गोटे पथरटे अच्छी गोटे हॉरिजॉन्टल फ्लोर उपरे जड़े लोक कहगला तू ताको टाण पुल कर जे लोकटा फास्ट कौन कला टर्बल फोर्स अप्लाई कले जीव कि जीवनी ताको कहगला आहरी जोर रे ताको पुल कर आहरी पुल कला कलानी जड़े लोक है दीज लोक है 3 जन लोक है 4 जन लोक 5 जन लोक आनिक टाणले मनकर 5 जन लोक ताको टाणी पारे ताने मन कर जड़े एप्लाई कला मन कर 20 न्यूटन स्लीप कलानी है 20 न्यूटन रे स्लीप कलानी 40 न्यूटन एप्लाई कला 50 न्यूटन एप्लाई कला 100 न्यूटन एप्लाई कला राइट 100 न्यूटन एप्लाई कला ठीक अच्छे बुझे ना बुझेनि 100 न्यूटन एप्लाई कला 200 न्यूटन एप्लाई कला राइट बुझे ना बुझेनि तेने 1000 न्यूटन एप्लाई कला मन कर 5000 न्यूटन रे ये स्टार्ट कला स्लाइडिंग मन कर मुझे 5000 न्यूटन रे ये स्लाइडिंग स्टार्ट कला 5000 न्यूटन रे स्लाइडिंग ये स्टार्ट कला तो 0 रु 5000 न्यूटन पर्यंत 0 रु 5000 न्यूटन पर्यंत ये कौन करथुला डिफेंस करथुला नीचकू डिफेंस करथुला स्लाइड करिनी मन कर देख या ऊपर बर्तमान मन कर ये 0 मन कर ये 0 राइट ये 0 तो ये मन कर 0 एफ इज इक्वल टू 0 या ऊपर कौन कौन फोर्स लगी गोटे एमजी तल को लगी आ गोटे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लगी आउ कि ना ये 0 अच्छी ये मन कर 5000 रे 5000 न्यूटन रे स्लाइड स्टार्ट करचु ता पूर्वर नुहे तो 1000 2000 न्यूटन जते बळे आमे अप्लाई करूछु 500 100 जते बळे आमे अप्लाई करूछु सेते बळे ये ताकू रेजिस्ट करूछु माने ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन रे गोटे फोर्सटा जनरेट होउची आपे 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 ताकू कहा जाए सेल्फ एडजस्टेबल ये जो फ्रिक्शनल फोर्सटा होची सेल्फ एडजस्टेबल जेते समय सी रेस्ट अच्छी ओके रेस्ट अच्छी ठीक अच्छे भल कि ना बुझ गोटे बड़ ब्लॉकटे हॉरिजॉन्टल फ्लोर अच्छी आमे धीरे धीरे फोर्स बढ़ाइबार लगिलु 0 रु धीरे 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 आमे बढ़ाऊछु गोटे पार्टिकुलर फोर्स रे से स्लाइड कला से पार्टिकुलर फोर्स को कौन कहती ना लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छा
गोटे ग्राफ माध्यम आम भल कि बुझा एटा मन कर एफ एटा एफ एटा कहगला फ्रिक्शनल फोर्स या कहगला एप्लाइड फोर्स राइट एप्लाइड फोर्स बर्तमान एप्लाइड फोर्स 0 फ्रिक्शन भी 0 हम एप्लाइड फोर्स 1 फ्रिक्शनल फोर्स 1 एप्लाइड फोर्स 2 फ्रिक्शनल फोर्स 2 एप्लाइड फोर्स 1000 फ्रिक्शनल फोर्स 1000 एप्लाइड फोर्स 5000 फ्रिक्शनल फोर्स 5000 ता परवर्ती मुहूर्त रे एप्लाइड फोर्स 5000.1 इट स्टार्ट स्लाइडिंग एक्सपेरिमेंटली देखा गला मन कर ये 5000 न्यूटन ये मध्य 5000 न्यूटन है राइट ता परवर्ती मुहूर्त रे ये 5000.1 कले जे टिके लेवल तलू करिकी कांस्टेंट हो गला एटा पूरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट राइट ये जो रीजन टा रहिला एटा स्टैटिक रीजन बॉडीटा रेस्ट अछि एटा काइनेटिक मोशन करछु काइनेटिक रीजन एठी फ्रिक्शन टा हुए सेल्फ एडजस्टेबल एठी फ्रिक्शन टा हुए डिसिपेटिव माने नष्ट करिवो एनर्जी को नष्ट कर दबो हला नष्ट कर दबो ए ग्राफ को भाई भल किना बुझो हला कोनोसी टिके पॉइंट रे घुसिबार नाही गोटे ऑब्जेक्टटा हॉरिजॉन्टल फ्लोर रे अछि आमे गोटे हॉरिजॉन्टल फोर्स पकाउछु एप्लाइड फोर्स पकाउछु हला 0 रु इंक्रीज करिकी गलु देखा गला जे 5000 न्यूटन रे से स्लाइड कला 5000 न्यूटन रे स्लाइड करिबा परे हला टिके फ्रिक्शन मन कर कमी गला मन कर आमे कहबा ये होची 4500 न्यूटन माने हम कथा को कहूछु राइट हला पूरा बुझुछ क्लियरली बोलो कि ना बुझ गोटे बड़ ऑब्जेक्टटा हॉरिजॉन्टल फ्लोर रे अछि हला तळकू एमजी फोर्स पडचू ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन पडचू आमे गोटे टेंजेंशियल फोर्स पकेलु हला गोटे हॉरिजॉन्टल फोर्स पकेलु एप्लाइड फोर्स पकेलु से फोर्सटा कांस्टेंट न वेरिएबल 0 रु धीरे धीरे आमे इंक्रीज करिकी चललु देखिलु 5000 न्यूटन जस्ट टिके क्रॉस कला बेलू सी स्लाइड करिया को लागिला जेतले स्लाइड करिया को लागिला सेतले फोर्सटा 4500 हो गला माने जस्ट 5000.0000001 न्यूटन पकेलु ये स्लाइड करिया लागिला तो 5000 न्यूटन पर्यंत सी एडजस्ट होई रही परथुला बुझेला तो याकू कहा गला 5000 न्यूटन को कहा गला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन ए जो 5000 को एठी कहा गला एठी 5000 को कहा गला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आउ 4500 को कहा गला काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओके याकू भी कहा जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन मध्य कहा जाए राइट लिमिटिंग फ्रिक्शन मध्य कहा जाए क्लियर लिमिटिंग फ्रिक्शन मध्य कहा जाए क्लियर तो वर्तमान देखो काइनेटिक रीजन को डील करिया कष्ट नुहे काइनेटिक रीजन को डील करिया आदु कष्ट नुहे कहीं ना फोर्सटा कांस्टेंट होची
स्टैटिक को डील करवा कष्ट कहीं एटी फ्रिक्शनल फोर्सटा एप्लाइड फोर्स उपर निर्भर करुचु ए एंगलटा आमर 45 डिग्री हम 45 डिग्री हम पार्टिकुलर केस पे ए केस पे है 45 कहीं जी एप्लाइड फोर्स से ही फ्रिक्शनल फोर्स आसूची तो स्टैटिक रीजन में आम इनफाइनाइट फ्रिक्शनल फोर्स पाइबा 0 रु लिमिटिंग पर्यंत किंतु काइनेटिक रे आम गोटे फ्रिक्शनल फोर्स पाइबा राइट गोटे फ्रिक्शनल फोर्स पाइबा तो एबे आम जानीगलु जते समय ये फोर्सटा पड़ीनी एप्लाइड फोर्स पड़ीनी से पर्यंत फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करनी ये पड़े ये ताकू रेजिस्ट करने को चेष्टा करियो जिते रेजिस्ट कर न पारियो सेते स्लाइड करियो एया ही फ्रिक्शन रो बेसिक रूल एंड रेगुलेशन राइट तो वर्तमान आम फ्रिक्शन रो डेफिनेशन दवा डेफिनेशन देकी एटा मो आइडिया देली इंट्रोडक्शन तापर फ्रिक्शन रो डेफिनेशन देकी आम आगको बढ़िया फ्रिक्शन सदाबेले कौन करे फ्रिक्शन सदाबेले करे कौन ना रिलेटिव मोशन को सदाबेले अपोज करे ओके इट अपोज और टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन मुझे लगा तो फ्रिक्शन को आम भल किना बर्तमान बुझा फ्रिक्शन जदि कह जाए फ्रिक्शन टा कौ टाइप रो फोर्स ना गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सरफेस रे कौन थाए इलेक्ट्रॉन थाए एटम थाए न्यूक्लियस थाए बुझी पारे तो सरफेस भितर जो इंटरैक्शन हुए सेटा इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन तेणुकिना गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है मु ऑलरेडी कही आम डेली लाइफ रे जो सब फोर्स आसूची आमर डेली लाइफ रे जो सब फोर्स आसुचु वेट को छाड़देले आपातत सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से जनरेट हुए माने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रु जनरेट हुए तो फ्रिक्शन गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्रिक्शन गोटे कांटेक्ट फोर्स दुईटा कांटेक्ट क्रिएट हुए एटा गोटे कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन गोटे टेंजेंशियल फोर्स always oppose relative motion ये गोटे रेजिस्टिव फोर्स ये स्टैटिक रीजन में सेल्फ एडजस्टेबल काइनेटिक रीजन रे नष्ट करे ध्वंस करे एनर्जी डिसिपेटिव तो एगुड़ा सब फ्रिक्शन रो नेचर ओके नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play between two surfaces in contact when one slide or tends to slide over other तार अर्थ होची फ्रिक्शन सेतेबेले दुईटी सरफेस उपरे जनरेट हुए पड़े जेतेबेले गोटे अन्यटा उपरे स्लाइड करे बा करबा को चेष्टा करे एमती अच्छी फ्रिक्शन पड़िबनी
मोशन कले फ्रिक्शन पड़ो से फ्रिक्शन पड़ो एनर्जी नष्ट हो रही जाऊँगी कि तुम टाणिले टाणिले ये स्लाइड कर न पारे किंतु फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए जमती मुझे कहली स्टैटिक रीजन रे फ्रिक्शन टा सेल्फ एडजस्टेबल जनरेट हो बुझल तो जनरेट हो मो कथा क्लीयरली बुझी होचे तो force of friction comes into play between two surfaces in contact when one slide or चेष्टा करे tends to slide over other आउ ये गुड़ा होचे बेसिक नेचर गुड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स हला टेंजेंट दिगरे लागे टेंजेंशियल फोर्स रेजिस्टेंस कर रेजिस्टिव फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज कले सेल्फ एडजस्टेबल इन स्टैटिक रीजन डिसिपेटिव इन काइनेटिक रीजन ओके तो वर्तमान मु कौन से गोटे ऑब्जेक्ट को गोटे वेरिएबल एप्लाइड फोर्स पकईकी ताकू चेक कली राइट ताकू चेक कली या ऊपर तलकू वेट पड़ूला सरफेस ताकू दउथला नॉर्मल रिएक्शन जते बेले मोर फोर्स 0 रु बढ़ी बढ़ी गला 0 रु बढ़ी बढ़ी गला सेते बेले मते एई ग्राफ टा मिलला राइट एटा होचु एप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स एटा होचु फ्रिक्शनल फोर्स राइट ये 45 एंगल मते देखा गला ए वैल्यू मते मिलिला ए वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन आउ ए वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन completely experimental fact right एठो जना पड़ुचु mu s n greater than mu k n बेटा n कौन ना नॉर्मल रिएक्शन mg सदाले भाबनी इंक्लाइन सरफेस नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा हबो राइट mu s कौन ना को एफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये काइनेटिक ठार ग्रेटर इट इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट mu के होची को एफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन राइट काइनेटिक फ्रिक्शन एटा कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मु मोर टेंजेंशियल एप्लाइड फोर्स को बढ़ी बढ़ी चलली फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है कि बढ़ी 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 चलला गोटे पिक पॉइंट रे पहुंचला दैट इज mu s n तापर जस्ट टिके क्रॉस करियारु से स्लाइड करिया को लागिला फ्रिक्शनल फोर्स टा कांस्टेंट हे गला मु पूर्वरु मध्य कहितली वर्तमान एटा स्टैटिक रीजन रे फ्रिक्शनल फोर्स टा मु कहली सेल्फ एडजस्टेबल ए रीजन रे हला सेल्फ एडजस्टेबल आ ए रीजन हला ध्वंसकारी डिसिपेटिव हला गोटे इटा को हॉरिजॉन्टल सरफेस रे फपाड़ दियो किछि दूर स्लाइड करके जाई के रेस्ट हे जो काई बाय रेस्ट हला काई रेस्ट हला ये ना एति पई तार काइनेटिक एनर्जी टा फ्रिक्शन अगेंस्ट रे वर्क करके नष्ट हो गला एट देखो एट दीटा लॉ आसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एटी आसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ए पॉइंट टा आ लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लॉ ऑफ काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन ना लिमिटिंग माने मैक्सिमम हला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन टा को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाए हला लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन okay and depends on the nature of two surfaces in contact semti kinetic friction directly proportional to normal reaction
and it depends on the nature of two surfaces in contact. Okay, eka katha ବୁଝି ହେଉଛି it is independent of area of contact because real area of contact is very less than the virtual area. Okay, तो वर्तमान law of friction तापर छुटिया छुटिया क्वेश्चन करके बंद करिया हला law of friction number 1 limiting force of static friction. Limiting force of static friction directly proportional to normal reaction and depends on nature of two surfaces in contact. It independent of area of contact, virtual area, because real area of contact is very less as compared to virtual area. virtual area टा जोटा आमर खाली आखि रे देखा जाए जो एरिया टा हमें देखिछु एटा हो जो virtual area ये जतले आगुर सरफेस रखी दो पूरा एतिक एरिया टा कांटेक्ट होबनी एतिक एरिया कांटेक्ट ले तमे ताको उठै पर न थांतो वेल्डिंग हे जाई थांता राइट सेमती kinetic force of friction directly proportional to normal reaction and depends on nature of two surfaces in contact. It independent of area of contact माने जोटा आखिरे देखा जाउछु virtual area because real area of contact is very less as compared to virtual area. Okay, virtual area तो एतिकी हला जिनस. ओके तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन देखलो आ गोटे रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग करा बेले जो आसे ता बहुत कम हला बुझिल त सेटा बहुत कम. तो वर्तमान आमे कोन पढिबा ना फ्रिक्शन काहे की आसुची
फ्रिक्शन कहीं आसुची कज ऑफ फ्रिक्शन दुईटा थियोरी अच्छी ओल्डर थियोरी आ गोटे हूँ मॉडर्न थियोरी एटा कहती मॉलिक्यूलर थियोरी या कहती क्लासिकल थियोरी है तब एटा क्लासिकल थियोरी कौन कहला ना रफनेस जो फ्रिक्शन हुए फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस क्लासिकल थियोरी कहला फ्रिक्शन रफनेस जो हुए रफनेस रफनेस आबुड़ा खाबुड़ा रफनेस जो फ्रिक्शन हुए राइट फ्रिक्शन टा रफनेस जो हुए क्लियर ना बुझी पारलनी रफनेस जो फ्रिक्शन हुए है ता अर्थ रफनेस अर्थ कौन ना रफनेस अर्थ हूँ हे रफ एगुड़ा को रफ कह जाए रफनेस एटा ऊपर सरफेस एटा तल सरफेस एटा तल सरफेस है तल सरफेस ऊपर सरफेस रो प्रोजेक्शन तल सरफेस रो डिप्रेशन तल सरफेस रो प्रोजेक्शन ऊपर सरफेस रो डिप्रेशन रे सेट हो जाए कि इंटरलॉक करे इंटरलॉक कले फ्रिक्शन हुए छोट पिला भी कहीदेव माने दांत 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 होइछि यार प्रोजेक्शन रे तार डिप्रेशन तार प्रोजेक्शन रे यार डिप्रेशन सेट हो जाउछि हला तेणु कि फ्रिक्शन सृष्टि होउछि हला सेति पई फ्रिक्शन सृष्टि होउछि हला ता अर्थ कौन जदि आमे से रफनेस गुड़ा को भांगी दबा तबे फ्रिक्शन कमी जीव तेणु कि आमे घसी घसी ताको प्लेन कलु फ्रिक्शन देखिलु कमी गला आहुरी घसिलु आहुरी फ्रिक्शन कमिला फिर आहुरी घसिलु हठात करे फ्रिक्शन बढ़िला ओल्डर थियरी आ एक्सप्लेन करि पारला नहीं ओल्डर थियरी कौन कहला ना ओल्डर थियरी कहितिला फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ओल्डर थियरी कहितिला फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस राइट ओल्डर थियरी कहितिला फ्रिक्शन इज ड्यू टू roughness the meaning of roughness is projection and depression the projection and depression set themselves create interlocks that interlocks prevent the motion cause friction that means when roughness reduced when roughness decrease the friction decrease that means when we polish a body then its friction decrease but it is observed that when we do fine polish then again friction increases which cannot be explained by the older theory then we design molecular theory we never neglect older theory friction is also created due to roughness interlock right but beyond that when all interlock breaks it become polish and polish and polish why again friction increase older theory cannot be explained then we introduce the molecular theory when we rub two different body then projection depression breaks and friction reduce when we polish and polish and polish and polish then what happen more and more and more and more area come in contact okay more and more real area come in contact more and more real area come in contact okay they form temporary welding cold welding temporary welding temporary welding cold welding okay cold welding right when we polish the body
more and more area come in contact. In contact position, they welded with each other. At the contact position, they welded with each other. Okay, then again friction increases. Therefore, both the theory has equal importance. Okay, friction is also due to roughness, okay, interlock, and friction also due to molecular attraction. When more and more area come in contact, then attraction increases, friction increases. At the contact point, they cause temporary welding, okay, or cold welding, right? Both theory are equally important. Okay, then we work out some question, then we stop our lecture. Just look at. Question is, find frictional force and acceleration. All are 5 kg mass. Mu s 0.3, mu k 0.25, g is equal to 10 meter per second square. Okay, simple. Question 1, 5 kg is just kept on an horizontal surface. Second, 5 kg, this is 5 kg, this also 5 kg. Now here 10 Newton force applied, then here 12.5 Newton is applied. Here 14 Newton is applied. Fifteen Newton is applied. Sixteen Newton is applied. Okay. Here mu s 0.3, mu k 0.25. This same all case. Here mu s 0.3, mu k 0.25. Here mu s 0.3, mu k 0.25. Here mu s 0.3, mu k 0.25. Here also mu s 0.3, mu k is equal to 0.25. Here mu s 0.3, mu k is equal to 0.25. बर्तमान देखो बेटा, एटे कौन होउची, किछि अप्लाइड फोर्स नाही, ओनली वर्टिकल mg अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन. एटे फ्रिक्शनल फोर्स त पूरा जीरो हबो, एक्सेलरेशन जीरो हबो, राइट. म्यू mg पकैबनी हैला. एटे देखो 10 न्यूटन. आमे म्यूएशन टा टिके चेक करिवा. म्यूएशन केते ना 0.3 into 5 into 10 म्यूएस mg तो केते हला 15 न्यूटन. म्यू के n 0.25 into 5 into 10 12.25 न्यूटन. ओके, 12.25 न्यूटन, राइट. 12.25 ना 12.5 न्यूटन, 2.5 सही बच्चे, हाँ 12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन. बर्तमान देखो
we apply 10 Newton. 10 Newton is less than limiting. ମାନେ ଏଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବନି, ନ ସ୍ଲାଇଡ୍, acceleration 0. 15 Newton କ୍ରସ୍ କଲେ ଯାଇକି acceleration ହବ. 15 Newton କ୍ରସ୍ କଲେ ये 15 न्यूटन, ये तुम्हारा 12.5 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, राइट. वर्तमान 10 न्यूटन नेवर एक्सीड 15 न्यूटन, स्लाइड हेबनी. The frictional self adjustable 10 न्यूटन. Here also no slide, friction is 12.5. Here also no slide, friction is 14. Okay. Here also no slide, friction is 15. Limiting case, pura limit. This one, this one, this one. Here it starts sliding. It is exceeded 15, sliding. So here frictional force is 12.5 and acceleration is applied is 16. 12.5 resistive by 5. So 5 3.5 7 meter per second square. Check it again. 16 minus 12.5. So 5, it is remaining 15. Right. Okay. Clear. Now, if applied force less than equal to mu Sn, then F is equal to F. This is the condition. If F equal to or less than mu Sn, then F is equal to F. If F greater than mu Sn, then F is equal to mu Kn. Just remember this. If applied force is greater than limiting force, then frictional force is kinetic force of friction. In this case, acceleration is equal to applied force minus mu Kn divided by mass. Here acceleration is 0. F is less than or equal to mu Sn. F is equal to frictional force is equal to F. Right? Frictional force. There will be no acceleration. But here there will be acceleration. If F exceeds mu Sn, then F will be mu Kn. It is go to the kinetic region, right? The acceleration will be applied force minus kinetic force of friction divided by mass. So we stop here, right? अधिका पड़ले हजम होनी, right?